सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। अब देखें कि हम एक जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का उसको किसी अदर जो सिस्टम्स हैं उनमें इंजेक्ट कर सकते हैं, उसमें कंबाइन कर सकते हैं और उसमें क्या एडवांटेजेस वो देखते हैं। So neural expert system rely on logical inference and the decision trees and focus on the modeling human reasoning. So the neural networks rely on parallel data processing and focus on the modeling of human. ये तो हमें पता है कि ये neural networks जो है human brain से inspire होकर बनाया और focus करता है modeling like human brains. So expert systems treat the brain as a black box. जो expert system है उसको as a black box deal करता है, जबकि जो neural networks है उसको parallel data processing brain की तरह यूज करता है. So neural networks looks at its structures and functions. अब देखिए जैसे मैंने आपको बात किया expert system और neural network से ड्रॉबैक्स और आपके उसके एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना शुरू कर दिए ताकि इसका कोई लायबिलिटी बने कि कैसे हमने उसको हाइब्रिड करना है, क्यों हाइब्रिड करना है. So knowledge in a rule-based expert system, a neural network look its structure and functional particular and its ability to learn. So knowledge in a rule-based expert system is represented by the if-then protection rules. So knowledge is in neural network is stored as a symplectic weights between the neurons. So in expert system, knowledge can be divided into individual rules, and the user can see and understand the piece of knowledge applied by the systems. And in neural networks, one cannot select a single weight as a discrete piece of knowledge and here knowledge is embedded in the entire network. It cannot be broken into individual pieces. It may change of the simple weights and many lead to unpredictable results. A neural network is a infected network. So can we combine advantages of expert system? अभी हमने सारे advantages discuss कर लिए and neural networks to create a more powerful and effective expert system. ठीक है ना जैन? ताकि जी जी सर. आइडिया हो गया ना कि मैं पहले से कह रहा था कि आपने हाइब्रिड मेथड करना है तो उसके एडवांटेजेस का आपको पता होना चाहिए. तो यही काम इसने भी किया कि इसने न्यूरल नेटवर्क के एडवांटेजेस और एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस को आपस में देखा और उसको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. So can we combine advantages of the expert system and neural networks to create a more powerful and effective expert systems? So hybrid system that combines a neural network and a rule-based expert system is called neural expert system or connectionist expert systems. So neural expert system हम इसको एक बना देते हैं with the help of hybrid method जो neural expert है. और इसने दोनों ही पावरफुल टूल्स को हाइब्रिड कर दिया, एक्सपर्ट को और ये अब ज्यादा हो जाएगा प्रोसेस. जी बिल्कुल. जिस भी पावर पे लगाएंगे, इसको इलेक्ट्रिक पे लगाएंगे, रियल वर्ल्ड में अगर इसको क्लासिफिकेशन के लिए लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन के लिए लगाएंगे, डाटा माइनिंग में लगाएंगे, डाटा साइंस में लगाएंगे, तो ये मच मोर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू द सिंगल अगर न्यूरल नेटवर्क को लगाएं या एक्सपर्ट सिस्टम. जी सर. So the heart of the neural expert system is the inference engine. इसमें क्या होता है? To control the information flow. Information को जो flow हो रहा है उसको control करते हैं in the system and initiates inference over the neural knowledge base. So a neural inference engine is also ensure approximation reasoning. Approximation reasoning क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं. In a rule-based expert system, the inference engine compares the condition part of each rule with data given in the data sets, and when the expert systems part of the rule matches the data in the database, the rule is fired and its then part is executed. The precision match is required and inference engine cannot copy with noisy and incomplete data. Noisy and incomplete data को जो है उसको रिमूव कर देती है, रिडंडेंट निकाल देती है. So neural expert system use a trained neural network
ट्रेन न्यूरल नेटवर्क ऑलरेडी डाटा से ट्रेन होता है इन प्लेस ऑफ द नॉलेज बेस पे ट्रेन किया होता है, एंड द इनपुट डाटा डज नॉट हैव टू precisely match the data, and that was used the network training. This ability is called approximately reasoning. Understand हुआ कि न्यूरल एक्सपर्ट सिस्टम है वो ट्रेन न्यूरल नेटवर्क के जो नॉलेज बेस है उसको यूज करता है, और उसमें जो इनपुट आती है वो प्रिसाइजली मैच नहीं करता डाटा के साथ, बात जो कि ट्रेनिंग में होती है। और दिस एबिलिटी, जो ये एबिलिटी है ये अप्रोक्सीमेट रीजनिंग कहते हैं। सो रूल एक्सट्रैक्शन है हमारे पास, न्यूरॉन्स इन द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स एंड ईच ऑफ व्हिच हैज ए numerical weights attached to it, and the weights in the trained neural networks determine the strength of importance of the associated neuron inputs. Rule of extraction, फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं आपने, फीचर निकालने हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन भी करते हैं आप, फीचर सिलेक्शन भी करते हैं, फीचर सिलेक्शन से पहले फीचर एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। तो ये फीचर रूल ऑफ एक्सट्रैक्शन है। न्यूरॉन्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय लिंक्स of each which has numerically weighted attached to it, and the weights in the trained neural networks determine वो strength and importance, उसकी न्यूरॉन्स की इनपुट की स्ट्रेंथ और इम्पोर्टेंस को मेजर करते हुए ट्रेन करते हैं। ये है जी ट्रेन्ड न्यूरल नेटवर्क टू आइडेंटिफाई द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और उसकी विंग्स हैं, टेल है, बैक है, फीदर्स हैं, इंजन्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं उसकी, ये हमारे पास नोड्स हैं, और ये हमारे पास बर्ड, प्लेन और ग्लेडिएटर होते हैं। तो ये उसकी जो है, इज देयर ए वे दैट वी कुड इंटरप्रेट रूल्स और वेट्स इन द मीनिंगफुल वे। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, उनको हम मीनिंगफुल वे में डिफाइन कर देते हैं बाय अटैचिंग कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस टू ईच इनपुट। अब क्या है जी, न्यूरॉन्स we can enable the system to promote the users for initial values of the input variables. Neuron wings, does the object have wings? Object के wings हैं। And tail, does the object have tail? Tail है कि नहीं है? Does the object have beak? Have feathers? Engines? अब क्या कर रहे हैं इसको? So if we set each input of the input layer either +1 or -1, true or false, binary system लगा दिया, और 0 unknown, we can give a semantic interpretation for the activation of any output neuron. Activation function जो हम कैलकुलेट करते हैं न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, उसमें आउटपुट निकालते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल विंग प्लस जो है वो बेक प्लस एंड फिथर प्लस बट डज नॉट हैव इंजन। सो विंग्स हैं, बेक है, पर इंजन नहीं है। So what can we conclude about the object being a bird, a plane, or gladiator applying the threshold for 0 to using these sign of functions in the activation function? इसमें से सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? विंग्स हैं लेकिन इंजन नहीं है, तो फिर वो बर्ड होगा, ठीक है। इंजन है तो वो ग्लैडिएटर होगा, ठीक है। So we can conclude this object may be bird. So इसके लिए x bird के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूले के जरिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5.3 ये बर्ड की मोशंस है, उसकी वैल्यू क्या लेके हम इजीली इसको इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट रूल्स फ्रॉम दिस न्यूरल नेटवर्क? रूल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स? सो रूल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूरल नेटवर्क्स, इसमें ये विंग्स वही हमारे पास ये विंग्स टेल्स है, ये डिफरेंट 1 2 3 पे फिगर्स डेटा पे और
सो एल्गोरिदम ये एक्सट्रैक्टिंग का एल्गोरिदम है. Algorithm for extracting इसमें क्या है जी, an inference can be made if the known net weighted input neuron is greater and neuron is greater than the sum of the absolute values of the weights of the unknown inputs. ये हमारे पास है unknown inputs की weights या values का sum of absolute value इस formula को दिए इसको find out कर सकते हैं. ये एक्सट्रैक्शन का फार्मूला है, जब भी आप फीचर एक्सट्रैक्शन में लिखेंगे तो ये सेम फार्मूला ही होगा. So in the neural rules below, suppose that you find an increasing amount of information about the object. It has feathers and beaks, it has feathers and beaks and wings. So at what point, according to the above algorithm, can be inference made that the object is bird, and how much different does the knowledge about the wings and सो इसमें विंग्स, टेल्स, बेक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लर्निंग करते हुए एक्सट्रैक्टिंग का मेथड यूज करते हुए वो बर्ड की वैल्यू जो है वो बर्ड है, प्लेन है या ग्लैडिएटर है वो उसको निकालता है. सो एंटर इनिशियल वैल्यू फॉर द इनपुट 12.8 अननोन जो उसकी वैल्यू फैक्टर है जो हम उसके नोड से आ रही हैं, तो नोन वैल्यू जो है वो 5.0 है. अननोन जो है वो अननोन से कंक्लूड जब हम उसको कंक्लूड करेंगे तो बर्ड उसके उसकी जो वैल्यू है वो बर्ड. हमने ये सारा जो फैक्टर है वो उस फार्मूले के थ्रू फीचर एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमने उसको रिजॉल्व किया.